I welcome you all in the next video tutorial of herbal drug technology. So dear students, in this video tutorial we are going to cover an important topic of herbal drug industry, present scope and future prospects. So far we have covered the different type of plant-based industries and institutions involved in the working of medicinal and aromatic plants in India. So let's start the topic of the herbal drug industry, present scope and future prospects. And for this topic, I am using an article of the marketing trends and future prospect of the herbal medicine in the treatment of the various diseases. So we will cover this topic by using this article. So as you can see the introduction, the herbal medicine is also known as the indigenous or the folk medicine and comprises of the medicinal knowledge system that develops over generation. And we have covered the different ancient system of medicines like Ayurveda, homeopathy, Siddha and Unani, which dates back to 5000 year BC. So it is very been traditional, or we can say the age old system. And in these articles, the authors have gone through various types of literature and they have found that there is a huge demand of the herbal products in the market. So traditional medicine has maintained its popularity in own regions of the developing world, and its use is rapidly spreading in industrialized countries also. In China, traditional herbal preparations account for 30 to 50% of the total medicinal consumption. In Ghana, Mali, Nigeria, and Zambia, the first line treatment for the 60% of the children with high fever resulting from the malaria is the use of the herbal medicine at home. Means this type of the underdeveloped countries still using or still rely upon the herbal medicine for their treatment. अभी भी कई कंट्रीज में, कई अफ्रीकन कंट्रीज में फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं हर्बल मेडिसिन, क्योंकि वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया दे रिलाई अपॉन हर्बल मेडिसिन. यू कैन सी अदर एग्जांपल्स आल्सो इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड अदर इंडस्ट्रियलाइज्ड ग्रुप्स. Over 50% of the population have used complementary or alternative medicine system at once. सिर्फ हम डेवलप्ड कंट्रीज की नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही, जो डेवलपिंग हो रही है और जो डेवलप हो चुकी है लाइक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी, हम स्टिल 50% ऑफ द पीपल, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, मतलब कन्वेंशनल सिस्टम को छोड़ के, एलोपैथी सिस्टम को छोड़ के, दे हैव यूज्ड द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम और द अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम एट वंस. You can see here in San Francisco, London and South Africa, 70% of the people living with the HIV/AIDS use traditional medicines or alternative system of medicines for their diseases. So these are the few figures that you have to remember. If we talk about the marketing of the market value of the herbal medicine, the market for the Ayurvedic medicine is estimated to be expanding at 20% annually. And you can so even in this COVID period, अब जब तक हमारे पास कोविड की प्रोमिनेंट वैक्सीन नहीं आई, तब तक हमने क्या चीजें यूज की? हर्बल मेडिसिन. वी रिलाई अपॉन द मेडिसिनल प्लांट्स. हमने अलग अलग प्लांट्स पे टेस्टिंग करके अलग अलग फॉर्मुलेशंस, या वो डिकॉक्शन की फॉर्म में हो या टी की फॉर्म में हो, हमने यूज किए ताकि हम अपने आप को प्रिवेंट कर सके कोविड से. उसी तरह से उस समय पे भी सेल्स ग्रेजुअली इंक्रीज हुई हर्बल मेडिसिन की भी. सो द सेल्स ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स हैव ग्रोन नियरली 25% in India in the past 10 years, that is if you talk about the 1987 to 96. The highest rate growth in the world. सबसे ज्यादा हर्बल मेडिसिन हम इंडिया में ही यूज करते हैं अभी भी. And the two largest user of the medicinal plants are the China and India. So according to the Export-Import Bank, the international market for medicinal plants related trade having a growth rate of 7% per annum. एक्सिम बैंक के अनुसार, ये एक्सिम बैंक है, EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसे हम एक्सिम बैंक भी बोलते हैं. इसके अनुसार द मार्केट फॉर द मेडिसिनल प्लांट्स जो ग्रोथ रेट हुआ है वो 7% पर एनम है. एंड द एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम इंडिया इज वैल्यूड एट ₹1200 million. So this is a huge amount. All the major herbal based pharmaceutical companies are showing a constant growth of about 15%. और अब हम सिर्फ हर्बल मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, हमने डिफरेंट फॉर्मुलेशन बना ली है हर्बल से, जैसे फाइटोसोम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रास्यूटिकल्स. तो न्यूट्रास्यूटिकल की भी बहुत बड़ी मार्केट हो रही है और धीरे धीरे होगी.
अब कोविड पीरियड में ही बात करें, कितने ज्यादा सप्लीमेंट्स हमने सब लोगों ने यूज करना शुरू कर दिए। प्रोटीन सप्लीमेंट हो या वो प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स हो, दे आर कंज्यूमिंग टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। So yes, market of the herbal medicine is in expansion family. It is expanding. A significant number of the modern pharmaceutical drugs have been derived from the medicinal plant. अब मेडिसिनल प्लांट के ऊपर हम रिसर्च करके जितने भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर हम एंटी कैंसर ड्रग्स की बात करें, विन क्रिस्टिन या विन ब्लास्टिन, वो किससे ऑब्टेन की है? नेचुरल ओरिजिन की ड्रग्स। सो प्लांट्स में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च भी हो रही है, जिससे प्लांट की और मार्केट इंक्रीज हो रही है, प्लांट की रिक्वायरमेंट है। If we talk about the India, the annual turnover of the Indian herbal industry is about rupees 2300 crore, which is very huge amount with a growth rate of 15%. अगर एक्सपोर्ट की बात करें, the export of the medicinal plants and herbs from India has been quite substantial in the last few years. India is the second largest producer of the castor seed, and castor, Ricinus communis is the plant. It is very used as a external as well as internal. And of the world in which we are producing about 1,25,000 tons per annum. The major pharmaceutical exported from India in the recent years are, India से जो हमने एक्सपोर्ट की हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं? इसबगोल, ओपियम एल्कलॉइड्स, सेना डेरिवेटिव्स, विनका एक्सट्रैक्ट, सिंकोना एल्कलॉइड्स, आइपेक रूट, then compounds like sodin, which is obtained from the solanum plants, diosgenin, again dioscorea, menthol, gudmar herb, mehndi leaves, papayan, revolvia plant, guar gum, jasmine oil, then agar, sandalwood oil, etc. So these all are very, very important plants for the purpose of export. So the herbal drug market in India is about $1 billion. And some of the medicinal plants whose market potential is very high have been identified and also mentioned in this article. अगर हम वर्ल्ड वाइड ट्रेड की बात करें, तो the global market for the herbal medicine currently stands at about $60 billion annually. And the sale of the herbal medicine is expected to get higher at 6.4% an average annual growth rate. तो ये इंक्रीज हो रही है बेसिकली डिमांड। हम वही चीजें बार बार पढ़ रहे हैं कि हर्बल मेडिसिन की डिमांड दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है। तो इस क्वेश्चन को जब भी आप एक्सप्लेन करोगे, ट्राई टू गिव एग्जांपल्स ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। जो हमने ऊपर एग्जांपल्स किए, तो वो एग्जांपल्स आपको नीचे भी एक्सप्लेन करने हैं। साथ ही आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। बिल्कुल सिंपल प्लांट्स हैं जो कि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हर्बल मेडिसिन में, लाइक तुलसी, ऑसियम सेनेक्टम, पार्ट्यूस लीफ, फैमिली लेबिएटी, यूजेस आर एंटीपायरेटिक, एंटीटसिव। तो इसमें से कम यू हैव टू रिमेंबर 10 प्लांट्स। नीम एज अ डायरेक्टा इंडिका, ब्रह्मी, सेंटेलिका एसिटिका, आंवला, एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, धनिया दैट इज कोरिएंडम सैटिवम, शतावरी, एस्पैरागस रोसमोसिस या एस्पैरागस ascendens, Veda terminale, Valerica, Cinchona officinalis, then Centellum album, that is Chandan, Vitex nigundo, Aconitum ferox. So you have to remember some of the important examples from this table also. Very important plant, Cannabis sativa, again very much important plant. अब हम ये बोल सकते हैं, the demand of the plant-based industries like herbal medicine, herbal products, food supplements is increasing both in developing and developed countries. आपको figures याद रखनी है. That is over 80% of the world population cannot afford the products of the Western pharmaceutical market, so they are rely upon the traditional plant-based medicines. Of WHO भी it is currently encourages, recommend and promote the inclusion of the herbal drugs in the national healthcare programs. Because reason क्या है herbal drugs को use करने का? Because such drugs are easily available at a price within the reach of the common man, and they are very much safer than the modern synthetic drugs, because synthetic drugs के side effects हैं। सो हर्बल ड्रग इंडस्ट्रीज में हर जगह पे हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो ओटीसी प्रोडक्ट्स हो, एसेंशियल ऑयल्स हो, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स हो, नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स हो, या फिर हेल्थ फूड्स हो, न्यूट्रास्यूटिकल्स, दे आर यूज्ड एवरीवेयर, इवन इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और टॉयलेटरी एक्सेट्रा, इन द कॉन्डिमेंट, इन द culinary industries, everywhere. So I hope this will give you a brief idea about the herbal drug industry, its different perspectives. So in the end, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So thank you very much for your patience and listening.